BYJU'S Exam Prep के साथ runs बनाओ और rewards पाओ. Participate in our Score to Win contest and stand a chance to win cricket merchandise and guaranteed discount on the purchase of our online classroom program. All you need to do is answer one simple cricket-related question. So what are you waiting for? Play to win now. Terms and conditions apply. Hello everyone. Welcome to this session. I hope you guys can hear me. You can see me as well. Let me know in the chat box. There are some of you who have joined me on the YouTube and some of you are there on the app. I'll try to, of course, answer queries from both places, but it can take time. तो थोड़ा बहुत time लग सकता है दोनों chat देखने में. So don't think I am not reading your chat. I am just going to distribute the time at both the places. Ashmita, hello. And I can see a lot of names already on the YouTube chat. Okay, काफी सारे नाम आ रहे हैं. So I'm not taking everybody's name. I'm just not doing that so that time बच जाए, है ना? So we are going to discuss something very very important today. तो आज का session बहुत important है. If you're watching me after the session is over, you can watch me at a higher rate. 1.5x पे देख लो, but end तक जरूर session देख लेना, attend कर लेना. It would be helpful, hopefully, है ना? Because now we are not left with too many days for CLAT. And last में क्या करना चाहिए? I'll just share some experiences and experiences of the students who have written CLAT earlier and what they did and what they did not do, stuff like that. I'll try to answer questions also जहाँ तक हो पाएगा, to the extent possible. Okay. All right, everyone. I can see lots and lots of names, but I cannot obviously take all the names. बहुत ज़्यादा नाम है तो मैं सारे नाम नहीं ले रहा. But I'll try to take up questions wherever it is possible. Okay. So let's begin. I can see app पे ज़्यादा लोग नहीं हैं. ज़्यादा लोग वैसे YouTube के chat पे available हैं. It's the same thing. It doesn't really matter much. Okay. All right, guys. Now let's begin. है ना? सब काफी लोग आ गए. I think we can start. So what is the agenda for today's session? So the agenda is very clear in front of you. Major headache of our time. Only few days left. What to do, what not to do. So I will quickly tell you what are we going to discuss in this session. So the first thing we would discuss is why do we need to manage time. I think that's self-explanatory, no? ये तो clear ही है time manage क्यों करना है. But before I move on, let me quickly ask. Let me ask you a question, okay? How much time do you think you will get to solve the CLAT paper? जल्दी से answer please. I want you to answer as fast as you can in the chat. जल्दी से. Let's see what's your answer. How much time will you get to solve the question paper? जल्दी से बताओ everybody. Okay. How much time would you get to solve the paper? Let's see. Okay, so I'll answer your queries. I'll try to take as many questions as possible. Don't worry. Or the session that we have designed will take care of your issues. Don't worry. वो सब हो जाएगा. और थोड़ा बहुत डर वर लगेगा अभी. That's natural, no? डर ना लगना is unnatural. So how much time will you get to solve the paper? Very good. Now I can see a lot of you have become, or you were always, very intelligent. Yes, very good. So I can see your answers. A lot of you have said 120 minutes. Obviously, wrong answer. पता ही है. You are likely to get 145 minutes. Sorry. Just a second. The pen has got stuck. Just a second, everybody. Just a second, guys. I think there was some trouble. I was not able to. Okay.
there was some trouble, I guess, in the writing pad, not able to remove anything. Okay, so usually we think that we will get 120 minutes, but the reality is you will get only probably 105 minutes. 105 मिनट ही मिलेंगे. पहली चीज ये आप दिमाग में डाल लो. A lot of students plan the entire paper as per 120 minutes, and then what happens in the actual paper is they panic. Now I may not be able to read all your comments. बहुत comments है, सारे मैं नहीं पढ़ सकता, but I think you will agree, yes or no? Number of students I have seen typically plan their paper by keeping 120 minutes in their mind, whereas you would actually get 105 minutes. Why am I saying that? I think you know the answer already, but I will quickly tell you why am I saying that. Okay, suppose you attempt 120 questions, right? If you attempt 120 questions and you take only 5 seconds to fill those ovals, है ना? तो ovals fill करने में, just a second everyone. So even if you take 5 seconds per question to fill the ovals, 120 into 5 is 600 seconds, right? That is 10 minutes. 10 मिनट तो जाएंगे सिर्फ ओवल्स फिल करने में, एंड 5 minutes किस में जाएंगे? 5 minutes would be lost in marking the roll number, filling up the form for roll number marking and things like that, correct? So you would end up wasting at least 15 minutes no matter what you do. पेपर 105 मिनट का ही होने वाला है. You will have to sign, you will have to listen to the instructions given by the invigilators. Sometimes they repeat the same instructions 3-4 times. You might get irritated also, but you can't do much. तो याद रखना 105 मिनट ही हैं आपके पास शाहरुख खान वाले स्टाइल में. ओके, 105 minutes only. So what are we going to discuss? I hope this thing does not. There's some trouble I'm facing with the writing board, I guess. Anyways, let's see. Hopefully session हो जाएगा. So first thing we will discuss how to manage this 105 minutes. Okay, पहले ये discuss करेंगे. We'll also discuss what to do in the next 25 days. Day wise plan क्या करना है, section wise plan कैसे करना है. We would also discuss very quickly the accuracy part, the steps to be followed part. There is something wrong with the PPT. It's got its own mind, I guess. पता नहीं क्या कर रही है, कुछ तो कर रहा है. Okay. So we'll discuss accuracy, steps to be followed, things to remember, and sections to focus on. Okay. Ignore the PPT. ये थोड़ा आज misbehave सा कर रहा है. Okay. So the first thing that you have to remember is that time management will happen at 2 levels. 2 level पर time management करना है. Okay. First is you have to manage it during preparation, correct? And second is during the paper. Now I want you guys to tell me, during preparation or during the paper में time management, now I hope you know, is more crucial here and not really here. Yes or no, everybody? Just a second everyone, I think I need to cross check something is not right. Just give me a moment. Let me see if I can do something about this problem. I'm just trying to fix the problem. I hope the problem goes away, but let's see. I'm not 100% sure, but let me try. Okay,
पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, बट I hope it doesn't work, doesn't hamper again. Okay, so very quickly, everybody. During preparation, I think this part is almost over. Correct? If you have not prepared for CLAT 2022 even till now, then आपको अब सिर्फ दुआ की जरूरत होगी. दवा का टाइम चला गया. Agreed? So this part, if you have not done much, तो अब रहने देते हैं, है ना. अब थोड़ी फिल्म देख लो, मस्ती कर लो, पंचायत 2 देख लो, पार्टीज अटेंड कर लो, बर्थडे पार्टीज कर लो, छुट्टियां मना लो, हिल स्टेशन पे चले जाओ, क्योंकि आपने तो जो करना था वो किया नहीं, राइट. बट इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग, देन यू कैन यूटिलाइज द टाइम इवन नाउ वेरी वेल. बट इफ यू आर समबडी हु हैज जस्ट स्टार्टेड टुडे, आज सोचा क्लैट करना है, एनएलयू जाना है, देन आई थिंक थोड़ा सा डिले हो गया है, थोड़ा सा 5%. But time management during the paper is very, very important. And we are going to focus on that more. I hope you understand more. We will also discuss other things. But paper में क्या करना है वो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे. तो एक बार मैं ज़रा next 25 days में क्या करने वाले हो वो डिस्कस कर लेते हैं. Okay, I'll also take up your questions. I'll look at the chat also. Don't worry. But just give me 2-3 minutes. एक बार थोड़ा सा शॉर्ट कर लें इसको. Okay. So first thing first. I hope you have counted your remaining days for CLAT properly. 25 days left, everyone. 25 days. I'm assuming 10 hours per day. You have approximately 250 hours left of preparation time. Correct? तो इतना ही है आपके पास. 250 hours है. Now, if you look at it, it's a huge amount of time. बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं कम भी नहीं है. But somebody who does not know how to use resources, the person will never have enough resources. Yes or no? धरती की हालत देख लो हमने क्या कर दिया ना. We had all the oxygen, all the water in the world, सारा वेस्ट कर दिया because we never cared about it. If you don't care about number of hours left, then very clearly you will not use it properly. We have 25 days left. That is about 250 hours of preparation. Huge amount of time. If you have been a sincere student already, but if you have not been, तो पार्टी और थोड़ा सा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना. Now, suppose you decide no, I will do my best in the next 25 days also. Then what can you do? The first thing is, after this I'll look at your chat. Okay, the first thing is, I still get messages from students. Remember guys, I still get messages from students saying, sir, can I do X, Y, Z? This X, Y, Z में कुछ भी लिख लो. I get this all the time. I get questions from students. Sir, my quant is not strong. कर लूँ? Sir, should I do, for example, I am very, very weak in, let's say, contract law. तो एक बार फिर से कर लेते हैं नया. बिल्कुल कुछ नहीं आता, फिर से कर लेता हूँ, नए तरीके से कर लेता हूँ. Sir, how can I improve my score by 50% in next 25 days? Sir, should I do vocab? Sir, I have not done GK of more than 5 months or 6 months. Should I cover the last 6 months also before that? तो अभी तक अक्टूबर तक किया है, जनवरी 2021 तक का कर लूं. Anything extra now will be a little counterproductive because you will not be able to be strong in that area. The effect or the ROI, the return on investment would be very, very low. ROI अच्छा नहीं आएगा, याद रखना everybody. Should you do anything extra? If it's new, if it's totally new to you, please don't do it. बिल्कुल मत करो. Okay, now let me quickly have a look at the chat and let me see if I can help with anything. Okay, all right, now let me quickly have a look at now very clearly look at the level of commitment of some students. YouTube के chat में वो हम बातें कर रहे हैं CLAT में क्या करना है, उनके questions क्या हैं. XYZ आप कहाँ से हो,
क्या आप भी उस शहर से हो जहां से मैं बिलोंग करता हूं? आपके क्वेश्चन से आपके इंटेंशन का पता चल जाता है. एंड आई एम रियली ग्लैड यू गाइज आर स्टिल वरीड अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. कौन कहाँ रहता है, कौन दोस्त बन सकता है, कौन दोस्त नहीं बन सकता. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, है ना? ऑल राइट. सो I'll come to that. I'll come to a lot of things in a while, but मैं जरा क्वेश्चंस तो देख लूं, है ना? क्वेश्चंस तो पढ़ रहा हूं तो मुझे क्वेश्चंस यही मिल रहे हैं. आप कहाँ से हो, क्या बात. ओके, चलो. तो कोई भी ज्यादा एज सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक, एक्सेप्ट कि आप कहाँ से हो वगैरह वगैरह. तो अब याद रखना एवरीबॉडी, कोई भी लड़ाई अगर जीतनी है ना तो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करके जीतनी है. तो प्लीज, out of the 5 areas, English, CR, GK, legal reasoning, quant, whatever is your strong area, only that area will probably take you to your dream NLU. Your weak area will not. तो प्लीज अपने वीक एरियाज को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर दो. I'll give you a very simple formula to remember. Whatever is your strong area is your friend. Whatever is your weak area, tell the weak area it's not working out between us. We are not made for each other. हमारा साथ यही तक था. Bye bye, thank you so much, but it's not going to work out. So let's say bye to each other. Suppose तुमसे क्वांट नहीं हो पाया अभी तक. Tell quant it didn't work out. We did our best. हम मिले, हमने एक दूसरे से बात की, ना मैं तुम्हें समझ पाया ना तुम मुझे समझ पाए. तो अब अपने अपने रास्ते पे चलते हैं, हमारे रास्ते अलग अलग हैं. एंड देन मूव ऑन. इट्स टाइम टू मूव ऑन. प्लीज डोंट स्पेंड योर एंटायर लाइफ फाइंडिंग योर एक्स. इट्स योर एक्स. प्लीज अंडरस्टैंड, पास्ट है, भूल जाओ उसे. जिस भी सेक्शन में आप स्ट्रांग नहीं हो उसे अब आप इग्नोर कर सकते हो. ओनली 25 days लेफ्ट. प्लीज डोंट एड इट टू योर बर्डन. कोई फायदा नहीं है. सो रिवाइज करना है, यस. नई चीजें सीखनी है, नो. और जो वीक है उसे तो बाय बोल दो, वो तुम्हारा पास्ट है, एक्स बन चुका है. करेक्ट. सो प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बट ओनली स्ट्रॉन्ग और की एरियाज. वीक एरिया के बारे में मैंने बता दिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. यस और नो? समझ में आई बात? ओके, चलो. नाउ Uzaifa, that's very nice. Now Shriya says, sir, if the weak area is CA, its weightage is a lot. तो अगर नहीं आता श्रिया तो क्या करेंगे? वेटेज बहुत है तो 35 questions will come from current affairs, right? Or let's not call it current affairs. Let's call it current affairs and GK. Static भी पूछा था लास्ट ईयर. 35 questions आते हैं और आपको कुछ नहीं आता एरिया में, तो क्या करें? कोई चारा है, कोई शॉर्टकट है? Unless Elon Musk develops a chip which gives you all the past CA of 2 years in a chip and you can put it in your head, क्या करें? कब तक कहानी सुनाते रहोगे कि वेटेज ज्यादा है, मुझे करना चाहिए, मैं तो करूंगा. अगर आपका वीक है वो एरिया तो अब आप कुछ नहीं कर सकते. दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है. करेक्ट. दो आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस कि मेरी बातें आप मानोगे नहीं. ओनली दोज हु आर स्मार्ट इनफ दे विल अंडरस्टैंड. कुछ लोग वो लास्ट तक ट्राई करेंगे, वो करते हैं ना, वो पीछे पड़ जाते हैं लोगों के. मान जा मान जा, नहीं मान रहा, इट्स नॉट वर्किंग, आगे बढ़ो. नाउ नेक्स्ट 25 days you can easily take 5 mocks and make a strategy that is final. For example, I'll share what I do in CLAT. इस बार भी मैं अगर CLAT देता हूं, मतलब फॉर्म तो भर दिया मैंने, बट अगर मैं CLAT देता हूं इस बार तो मैं आपको बता देता हूं, I will start my paper with GK because
10 मिनट में खत्म हो जाता है. Then I'll go to CR because CR is my strong area. Then I'll go to English because English is my another strong area. Then I'll go to legal reasoning because being an LLB and all, मुझे legal reasoning थोड़ी बहुत आती है, मैं कर लूंगा. फिर मैं जाऊंगा क्वांट में, अगर टाइम बचा तो, मूड रहा तो, क्योंकि आई एंड क्वांट वी डोंट टॉक टू ईच अदर मच. आपस में दोस्ती कम है, मिलना जुलना नहीं होता, बातचीत बंद है. मेरी स्ट्रेटेजी मुझे पता है, आई विल नॉट चेंज इट फॉर एनीथिंग. पेपर कैसा भी तो मैं यही करने वाला हूं, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम स्ट्रॉन्ग एट, व्हाट आई एम गुड एट, एंड आई नो व्हाट आई एम नॉट गुड एट. पेपर कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे ही करने वाला हूं. बिकॉज आई हैव रिटन मॉक्स, आई हैव प्रिपेयर्ड, आई हैव स्टडीड, आई ऑलरेडी नो. तो मुझे अपनी स्ट्रेटेजी मालूम है, आपको यही करना है. अब टाइम नहीं है आपके पास, बट मॉक्स जरूर देते रहना. I don't suggest one mock per day. बहुत सारे लोग कहते हैं वो एक mock रोज दो. No, you have to revise also. No, you have to also see what is going wrong and how to improve that. Probably one mock, 3 mocks per week काफी है. Max 3 mocks per week max. So next 25 days probably you can do around 8-9 mocks max. But 5 mock और दे लो and strategy final करो. अब वो वक्त आ गया है. Correct? Now, today, before it's 12 o'clock, you should have a day-wise study plan for next 25 days. अब याद रखना, इसमें 19 को मत शामिल कर लेना. Every year I have seen students studying in front of the test center. उनसे जाके पूछना चाहिए तुम क्या पढ़ रहे हो. It's an aptitude test. Aptitude takes time to build. आपका एप्टीट्यूड बन चुका है, लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ रहे हो. बट दैट्स आवर स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम हैबिट. नो, पढ़ लो, लास्ट में कुछ तो आ जाएगा. कुछ नहीं आने वाला. चिल करो. 19th इज आउट. 19th आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, पढ़ाई का हिस्सा नहीं है. बाकी बचे दिन में तैयारी कर लो. बट यू शुड हैव अ डे वाइज स्टडी प्लान. नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट शुड आई स्टडी, दैट यू डिसाइड. आई विल ओनली गिव यू द फ्रेमवर्क. मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूं, आप डिसाइड करो क्या करना है. करेक्ट? Now, Nandini, Shyam, I'll come to that, don't worry. Okay? Don't worry. Ipshita, I'll come to that. Okay. Udeshi. Now, Udeshi, look at what Udeshi is asking. And I think a lot of students will benefit from the question, okay? Now, see how priorities should be made, but you do not make it. Udeshi's question is, my quant and legal, I'm performing equal in both sections. Which one should I do first? Is that correct? Which one should I do first? You are comparing probably an ant with an elephant. 40 क्वेश्चन आते हैं लीगल रीजनिंग में, क्वांट में 15. सपोज यू आर आइंस्टीन इन क्वांट, हाउ मच कैन यू गेट? 15. सपोज यू आर 70% एक्यूरेसी वाला एवरेज स्टूडेंट लीगल रीजनिंग, and in half an hour you can do, let's say, 25 questions. You still can manage 15 marks, no? For this you have to be very very good in the section. Even if you're average, you can do 15 in legal reasoning. सवाल कहाँ है इसमें, पहले कौन सा करना है? You decide based on what you are strong at and which section has how much weightage. ज्यादा क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? क्वांट और लीगल रीजनिंग को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. इनफैक्ट क्वांट को आप किसी सेक्शन से कंपेयर ही मत करो. क्वांट इज अ टोटली डिफरेंट सेक्शन. लुक एट द वेटेज, 10%. तो आप अगर अच्छे हो करो, अच्छे नहीं हो तो भूल जाओ उसे. अब किसी भी सेक्शन में आप अच्छे नहीं हो तो आपको भूलना पड़ेगा. वेयर इज द ऑप्शन? करेक्ट? सो वेरी क्विकली, यू हैव ओनली 25 days लेफ्ट. 19 तो हटा ही दो, 24 ही रखते हैं. करेक्ट? व्हाट कैन यू डू? इन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, प्रैक्टिस सेंट्रल आइडिया बेस्ड
theme based questions, tone based questions, inference based questions. Inference are like indirect questions, true, false, which one is true, which one is not true, which one is author is likely to agree, not likely to agree, जितने हो सकते हैं. Current affairs, revise, but please don't add extra. अगर तुमने लास्ट 6 महीने का किया है तो उसे रिवाइज कर लो. 6 महीने का किया है, don't go back in time and do 6 months more. Don't do that. You'll mess up both. लालच नहीं करना है. Whatever you have done, revise twice, thrice, be good in that. अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा. Legal reasoning, revise important concepts. I have given this example multiple times. Contract law, मुझे कुछ याद नहीं है. But I know if I revise contract law, I will be able to attempt good questions, good number of questions in CLAT. मुझे पता है ये बात ना, तो मुझे रिवाइज करने की जरूरत है. आपको भी पता होगा. What are you good at, what are you bad at? You just need to revise those areas. Tort, for example, I know I'm okay. चल जाएगा, कर लूंगा. तो मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. But contract definitely. You also have certain areas. Find out and revise. And in legal reasoning, past year papers देखो. Because questions are not content wise, but structure wise. Paper questions are repetitive. वही राम का श्याम हो जाता है, राम कुआं में कूदता था, श्याम कूद जाता है, फिर पीटर कूद जाता है, चलता रहता है. करेक्ट. सो लीगल रीजनिंग में लुकिंग एट पास्ट ईयर पेपर्स कैन बी वेरी हेल्पफुल. लॉजिकल रीजनिंग, यू नो, क्वेश्चन टाइप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो. स्ट्रेंथ एंड वीक एंड इन्फरेंस assumption. And in quant, if you're good at it, and revise. If you're not good at it, I think you should attend the sessions that we are doing. But beyond that, don't try to learn anything new. अब लेके बैठोगे तो बहुत देर हो जाएगी. कोई भी टॉपिक for that matter. Correct? By tonight 12 o'clock, you should have this list ready if you are sincere. कि मैं ये करूंगा, ये करूंगी और ये नहीं करूंगी. You should have that list ready. 25 days का plan. I hope you understand the point I'm making. है ना, समझ आ रही बात? Now let me see any more question. Prachi Mishra, we can take your question later. Not relevant to this session. All right. Uzaifa, yes, you can do that. Yeah. Okay. Now, very important. During the exam, first thing first, let me tell you guys, पानी पी के जाना. Last year, CLAT examination admit card mentioned that you can bring a clear, transparent water bottle. I took it to the center. They did not allow the water bottle inside, and then there was no water. It can affect your performance, honestly speaking, because June can be hot in some areas. Unless you are writing it in Himachal Pradesh and other areas, it can be hot. पानी वानी पी के जाना, थोड़ा सा खाना वाना खा के. Right now, number of questions 150. Number of minutes available 120, but available for solving questions 105. Marks required. Now this is a very dangerous question. Are we sure 105 से हो जाएगा काम? No. Maybe this year paper all 150 questions are 5th class questions. Then the cutoff for the top 3 can be as high as 140. Who knows? But based on the last 2-year CLAT papers, we are looking at 105 for the top NLU. You know that. So if you are looking at NLS Bangalore, then we are saying 105 to ले आओ यार, be safe. But I hope you understand. It will go up and down depending on the paper. I'll show you also. Just wait. Now, how many attempts? If you have an accuracy of 85 plus, then you can manage NLU Bangalore with 120, 125 attempts. You can manage. But if your accuracy is 70%, then you have to attempt the entire paper, which in itself is a tough task. कुछ लोग कर लेते,
but थोड़ा मुश्किल काम है. So accuracy should be high, but if I say it should be high, can it become high overnight? नहीं होगा. So you find out what is happening, what is your accuracy, what can be done, where are you making mistakes. अभी भी 25 days है, 250 hours of work can be done. आराम से कर सकते हो अभी भी. Correct? So this is very important. You have 150 questions, 150 opportunities to get into NLU. You have 105 minutes to do it. You should target 105 marks तो चाहिए अपने को. Target attempts 120, 125, accuracy target 85%. Can it all change? Yes, depending on the paper, right? Now, just have a look at this chart and see how your target can change. Last year, that is 2021, the topper got 125 marks, 125.5 marks, right? And 2020 topper got 127.25 marks. Correct? Now look at the 100th ranker score and you will see how the paper of 2021 was easier comparatively, and see how the scores are changing. CLAT 2021 100th ranker had 102.25. CLAT 2020 100th ranker had 92.75. Which means, now listen to me very carefully, which means in CLAT 2020, if you got 92 marks, you were looking at Nalsar, you were going to Hyderabad. But if you had 92 in 2021, you were missing Hyderabad almost for sure. Now see the problem here, we cannot predict anything. You can see between two exams, for 100th rank, the score difference is almost 10, which is a huge difference actually. Just to remind you, two students who score a score difference of 0.25 means, suppose somebody scores, let's say 90 and somebody scores 89.75, the difference between these two guys can be 10 to 12 students, and if the scores are lower, it can be as high as 70 students. 0.25 के difference पे 70 students का difference बन जाता है if your scores are low, and higher पे 10-12 student का. And here, for the same rank, you can see the score difference is 10. What will happen in 2022? We have no idea. Will you need more marks? Maybe. Will you need less marks? Maybe. Depends on two things, paper level, student का level. But to be on the safe side, we are saying 104 अगर मिल जाए, 105 marks आ जाए, तो we'll be very happy. कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा. Correct? But you have to plan all that. And very importantly, please get out of this mindset of doing new things. मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो टाइम चला गया. Whatever you have, consolidate. उसे strong बनाओ. Correct? Now this you already know, so I'm not revising this. Okay, आपको पता है इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स में कितने आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, आपको सब पता है. This we know, so I'm not really looking at this, but we are looking at this, and then I'll look at your questions also. Target attempts. I told you this target can change. Paper can become very easy. It can become very difficult. It will go up and down, but with a mindset. Anybody who is good at English, anybody who is good at logical reasoning, good at legal reasoning, genuinely good in general knowledge and QT will attempt in this range. Now you have to keep in mind the time factor also. Okay, 25 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Legal will take time for sure, तो 30 minutes लग जाएंगे उसमें, इतना तो लगेगा, याद रखना. Now we have already spent 85 minutes. Sorry, 80 minutes. We have already spent. We are left with only 25 minutes more. 105 मिनट ही है ना, यानी this one will not take more than 10 minutes and this one should not take more than 10 minutes. Depending on your comfort area, तुम थोड़ा ज़्यादा टाइम कम कर सकते हो. For example, GK I don't take more than 10 minutes. इतना ही आता है, right? QT
I don't take even that, so I give more time to, let's say, English and logical reasoning or CR जिसको बोलते हैं. So I can increase time here and here थोड़ा. I would save time here. That's my choice. You decide. But remember guys, legal reasoning will take time, right? So इसको थोड़ा सा time आप accordingly decide करना. So you should have a target attempt range and timing in your brain already. At least 1 week, 10 days before the actual CLAT. कि मुझे ये करना है. Now depending on the paper's difficulty level, it will go up or down, definitely. Don't worry about it. Even sections can be hard, sections can be easy. It will go up and down. वो होगा. Correct? Okay. Now, मनीष जैन से स्ट्रेस हो रहा है. मनीष स्ट्रेस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है. स्ट्रेस ना हो तो टेंशन है कि नहीं. डोंट वरी, इट्स टोटली फाइन. ऑल राइट. नाउ अभिनव को समझ नहीं आ रहा कि 105 मिनट कैसे. अभिनव, डिड यू मिस द बिगिनिंग? 15 मिनट वी आर कीपिंग फॉर मार्किंग द ओवल्स. ओवल को काला कौन करेगा? इसके लिए टाइम चाहिए होता है ना. 5 सेकेंड्स पर ओवल इंटू 120 अटेम्प्ट. 10 मिनट तो इसी में जाएंगे. एंड 5 मिनट फॉर administrative things, signing the papers, marking your roll number and stuff like that. 15 मिनट आपके पास नहीं रहते हैं एक्चुअल पेपर में, इसीलिए we are preparing according to 105 minutes plan. Okay, all right. शाजिया शेख, I'll come to that also. अभी बताता हूँ. देखो, तो जल्दी से करते हैं. कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें बाकी हैं अभी. So Shazia just asked the same question. मैं वही बता रहा हूँ. Okay. First of all, in CR, in English, please don't spend all the time in understanding every single sentence. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे हर लाइन समझ में आनी चाहिए. Please remember guys, understand the story. Don't pay attention to details too much. When you read the questions, you will come back, right? And you have done these things 1000 times already. So I'm not explaining this again. But please do not read every single word or get stuck with every single word. Get the gist. Attempt CR and English section from the last year paper, even 2020 paper, and you would see, once you understand the central idea, you can solve CR questions like this. Main idea समझ में आ गया, CR ऐसे solve होता है. Main idea समझ में नहीं है, नहीं कर सकते. That is why locate the main idea. Direct questions पहले करो. Don't get stuck. In life, in relationship, in exam. Don't get stuck. It's not working out. छोड़ो, आगे बढ़ो. Please remember guys, if you are facing an easy and moderate question, even if it's indirect, solve. But if a question is giving you even 5 seconds of thinking time, you are thinking how to go about it, कैसे solve होगा, or you are thinking is it the right answer, is that the right answer, that means you are getting trapped. छोड़ दो उसे, आगे बढ़ जाओ. Mark, move on. Please remember, the invigilator may not allow you to write on the paper. Okay, at my center last year, they were not allowing us to mark the right answer also. तो आप solve करके right answer भी mark नहीं कर सकते. Which means, remember guys, you are solving the paper. Suppose you are doing CR, and on one paper, on one side of the paper, you have 3 questions. So you have to solve the question and mark the answer immediately. Otherwise, you will forget what was the right answer. Because I thought that I'll mark all the right answers, then I'll fill the OMR page by page. That's what I do, page by page. Okay, not the entire section. Don't do that, page by page. But they did not allow that. They said no, you can't mark the right answer. So I had to solve the question and then mark the right answer. What I started doing later was just to put a dot there. That's okay. I'm not writing anything. Just put a dot and later on mark the answer. Do it page wise. Please don't do it in one go. पूरा section एक बार में करूँगा. Don't do that. You'll panic. छूट जाएगा. And difficult questions only in the second round if you have time. Suppose you have solved the entire paper. You're left with 5 minutes. You're like, अच्छा वो question था, difficult था, देख लेता हूँ. You won't get time, but still, difficult questions only later. Do not get stuck. There are 150 questions. Difficult question में नहीं अटकना है. Okay? So, always go with your strong area first.
I'll discuss that also. Strong area, if your strong area is this, if it's that, क्या करना है, okay? Always attempt easier sections. Please remember, guys, you do not have to solve questions. You have to score. ये ध्यान रखना. You will go to an NLU if you score, not if you attempt the paper. Attempt के कोई marks नहीं मिलते. Score करेंगे तो जाएंगे. Attempt तो वो तो टिक लगाना तो कोई भी कर सकता है. So please remember, whatever is your strong area, whatever section you think is easy, वो first half an hour में हो जाना चाहिए. Why? Because when you see a lot of black dots on the OMR sheet, no, तो इससे बहुत मन की शांति मिलेगी. ऐसे black dots दिखेंगे तुम्हें ना OMR sheet पे, you will feel at ease. You will be like, okay, I am making progress. But if the black dots on the OMR sheet are very few and far between in the first half an hour, पैनिक कर जाओगे. तो स्ट्रॉन्ग एरिया इजियर सेक्शन पहले करो, जो तुम्हें आता है, लीगल रीजनिंग, सीआर, इंग्लिश, क्वांट, जो तुम्हें आता है पहले वो करो. एंड व्हेन यू सी, लुक एट योर ओएमआर शीट एंड यू सी अ लॉट ऑफ ब्लैक डॉट्स, यू विल लाइक, हाँ, आई एम मेकिंग प्रोग्रेस. अदरवाइज यू विल पैनिक. तो ये बहुत जरूरी है. करेक्ट. If you see a question from the topic that you have not touched, very important. You suddenly see a question from a topic तुमने किया ही नहीं है, and you are like, देख लेता हूं क्या कह रहा है. Don't. I'll give you an idea. If they ask me a question from geometry, क्वांट में अगर ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन होगा, मैं उसे देखूंगा भी नहीं. Because I know in geometry, if they ask me, is this a straight line? मुझे वो भी नहीं आता. मैं बात ही नहीं करूंगा. I will not touch it because I know nothing about it. मैं नहीं करने वाला. ज्योमेट्री मेरी बचपन से वीक है. करेक्ट. So if it's a new topic I have not touched, I will not look at it. मैं बाद में भी नहीं आऊंगा. इसमें तो चलो लिखा है कि बाद में देख लेना, बाद में भी नहीं देखूंगा मैं तो. I want black dots on the OMR sheet. शांति चाहिए दिल को. करेक्ट. But if it's a direct question, like vocab based question आ गया, I can quickly have a look and try to solve it. I need score. Direct question, GK, law. Last year, for example, I don't study GK that much, or you have like, the very dedicated sessions, and आपके sessions बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं. तो I do not know that much. I just read newspapers, that's it. Last year when I did the paper, it had static questions also, and I could do them because I generally read a lot otherwise. तो हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मैं करता गया, हो गया, मार्क्स आ गए. बट इफ दे आस्क मी समथिंग आई हैव नेवर रेड, आई विल नॉट टच इट. मैं क्यों करूं, टाइम वेस्ट क्यों करना. करेक्ट. सो यू हैव टू नाउ इन द नेक्स्ट 25 days you have to work on the mindset. ओके. सो प्लीज रिमेंबर, अगर आपका जीके और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एरिया है, जैसे मेरा इंग्लिश है, जीके नहीं है, but I always start with GK. Why? Because in 10 minutes the game is over. सेक्शन खत्म. और 15-20 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, मार्क कर दिया, शांति आ गई, तसल्ली आती है दिल को, है ना. सो इफ यू आर गुड एट जीके एंड इंग्लिश, और एटलीस्ट इन वन ऑफ द टू, पहले जीके कर लो, खत्म कहानी, हेडेक खत्म. राइट. एंड इट्स माई एक्सपीरियंस. I don't know about you guys. I have tried 2020 CLAT. I wrote 2021 CLAT. GK में पैराग्राफ पढ़ने से मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ. You guys may know more. So please follow whatever your faculty members tell you in the class. But I didn't get any benefit out of reading the passages. Let me know in the chat अगर तुम्हें कुछ फायदा होता है तो. मुझे तो कुछ समझ आया नहीं, मैं तो ऐसे ही कर दिया. राइट. सो जीके पहले करना अच्छा रहता है. 10 minutes, game is over, कहानी खत्म, move on to the next section. Right? You can start like that. So let me know if you read the paragraph and उससे कुछ फायदा होता है कि नहीं, मुझे बताना जरा. Okay? सत्य प्रताप सिंह से केसलेट आए क्वांट में, तो क्या करें, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो छोड़ दें. तब से मैं क्या समझा रहा हूं, तुम्हें सॉल्व करने के मार्क्स मिलेंगे या अटेम्प्ट करने के.
सत्य प्रताप सिंह बाद में जाके बोलेगा दुनिया को मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, बट मैंने 2 घंटे में सिर्फ 5 क्वेश्चन किए. डू यू थिंक एन एनएलयू वुड कम एंड से ओ आपने 5 क्वेश्चन किए 2 घंटे में, आप तो बहुत बहादुर हैं, आइए आपका स्वागत है? नहीं होने वाला ना. यू नो द रियलिटी. वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, उनको जो चाहिए वो आप पे ढूंढेंगे ना वो. तो प्लीज कीप दिस वेरी सिंपल थिंग इन माइंड. यू हैव टू बी लाइक अ लॉयर. आई हैव टू विन द केस. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केस जीतना है. कैसे जीतूंगा? स्कोर करके. एंड ऑफ द स्टोरी. यस और नो? Ayushi says, can we use pencil to fill OMR? No. Last year at least they did not allow. They said very clearly pen, which means OMR एक बार काला हो गया तो दोबारा नहीं कर सकते. Wrong fill हो गया तो हो गया. Okay? You can't do anything. Don't try blade लेके खुलचना वगैरह वगैरह. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं. After GK, after English, you can do CR if you think it's strong. If it's not, आपकी चॉइस है. बट रिमेंबर गाइस, 2020 2021 CR एंड इंग्लिश प्रैक्टिकली वर सेम. 20 में फिर भी इंग्लिश वाज लिटिल डिफरेंट. 21 का इंग्लिश एंड CR वाज प्रैक्टिकली सेम, एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन लाइक फिगर्स ऑफ स्पीच एंड टोन एटसेट्रा छोड़ दें अगर, तो सेम ही था. आराम से कर सकते हो. ओके. नाउ लॉ करें या QA करें, आपकी मर्जी. बट माई सजेशन इज QT डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ number of questions. So legal reasoning करना makes more sense. But some students will say, sir, मेरा जीके बहुत स्ट्रांग है, अब क्या करूं? तो और भी अच्छी बात है, जीके से ही शुरू करो, काम खत्म. करेक्ट. Now, suppose student says, sir, should I start with English or CR? Can I do GK at the end? Now remember guys, we can never be sure about at the end at your examination center. Very important. मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना. At the examination center, I wrote the paper last year. Last 10 minutes, I can tell you. Last 10 minutes, the invigilator kept on saying, you have 9 minutes, you have 8 minutes, you have 7 minutes, you have 5 minutes, you have 6 minutes left. Now his intention was good. I think he was basically telling us ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्दी से कर लो पेपर. But it was so distracting. Students got distracted. Last के 10 मिनट में if somebody was thinking of doing GK और QT और legal reasoning, उसका 10 मिनट तो खराब हो गया. I got irritated even though I was not writing it to clear exam. है ना? अगर आप दे रहे हो, आपके लिए तो हर सेकंड कीमती है. नाउ दैट जेंटलमैन वाज वेरी क्लियरली ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स कि देखो जल्दी कर लो, पेपर खत्म होने वाला है. गुड. बट लास्ट 10 मिनट्स का कोई भरोसा नहीं है. सो अ सेक्शन लाइक जीके लास्ट में मत करो. माय सजेशन इज दैट. बाकी यू हैव टू डिसाइड. सो यू कैन स्टार्ट विद इंग्लिश, वट एवर इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया. देन यू कैन गो टू CR, देन यू कैन गो टू लीगल रीजनिंग. करेक्ट. सो let me first wrap it up because I think I have to see if there is any question. There's a very important question Aditya has asked on the app. Okay, you will have separate area to solve questions which is at the end of the sheet of the question paper. I hope you know, but I hope you understand how uncomfortable it is, है ना. क्वेश्चन यहाँ पे और एक पेज एंड में दिया है रफ करने को, तो QT में फिर भी इट इज ओके. इट्स नॉट कंफर्टेबल अदरवाइज, राइट? बट यू कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन द पेपर. रिमेंबर गाइस, you cannot write. The idea is to avoid cheating. Suppose somebody puts all the correct answers on the sheet and then exchanges it with someone, तो चीटिंग हो जाएगी ना. दैट इज व्हाई दे डू नॉट अलाउ इट. सो प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन इट. OMR शीट पे पेन से फिल करना है. ओके. सो विच मीन्स इफ यू मेक अ मिस्टेक कुछ नहीं कर सकते. गया. Last year I did this with 2 questions. I solved the question correctly, I marked it wrong. और मार्क करने के बाद देख रहा हूं मैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन मुझे देख रहा है. And we are like, dude, you can't do anything about it. हो गया. करेक्ट. तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. प्लीज रिमेंबर
practice and plan according to 105-minute strategy. You will be thankful that you did later. मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपके सीनियर्स भी यही कहेंगे who are already at the NLUs that do not plan according to 120 minutes for framework. It will not work. Correct? Now, Mansi, no. Somebody is asking me on the app, can we underline? Don't. No. They will not allow it, mostly. Okay? So, जयप्रकाश भारद्वाज पेपर दे के देखो, दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ, क्योंकि देखो अब प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते ना, इतना टाइम नहीं है. इफ इट डजंट वर्क आउट देन वी हैव टू सी व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड फिर हो सकता है एक अटेम्प्ट और आपको देना पड़ सकता है लुकिंग एट योर क्वेश्चन. ओके, क्या कर सकते हैं, टाइम ज्यादा नहीं बचा है ना. बट रिमेंबर गाइस, यू कांट अंडरलाइन. ऑल राइट, सो Abhinav, it will not help. It will not help. Just look at the paragraph start, and if you think it's not working in the first 10-15 seconds, go to the next one. पूरा section skim करने का time नहीं है. It's a cutthroat competitive exam. Remember guys, time कहाँ है ना? You will have invigilators in front of you announcing things, telling you 10 things. उसमें पेपर भी देना है, लाइट भी चली जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ बिल्कुल, है ना, टाइम नहीं हमारे पास. Violet, अच्छा, OMR details you would fill up in the beginning itself. And last year at my center they did not give extra time. At some centers I have been told they gave extra time. At my center they did not. 2 घंटे में सब कुछ, समोसा खाना included, not by the student, but everything was included in those 2 hours. तो देख लो, इसीलिए मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ. Don't plan for 120 minutes. Plan for 105 minutes. Correct? Okay. Udeshi.com says what to do about vocab part. Now Udeshi, I think the answer is very obvious. भूल जा. Okay. Chalo, I think I have answered almost all the questions. Jyoti Bhargava, no, writing on the question paper is not allowed. तो आप मान के चलो आप नहीं कर पाओगे. नाउ इफ योर इन्विजिलेटर इज वेरी गुड, अलाउज एवरीथिंग, देन आई कांट से एनीथिंग, बट अलाउड होता नहीं है. ओके, सपोज योर इन्विजिलेटर इज अ वेरी काइंड पर्सन एंड से जो मर्जी करना है करो, देन इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट ऐसा होगा नहीं ऑब्वियसली. डोंट एक्सपेक्ट. So you go with the mindset that it will not happen. They will be very strict. They will not allow anything on the sheet. They will not allow anything to be written on the sheet. मान के चलो ऐसा ही होगा. नहीं हुआ तो अच्छी बात है, पार्टी कर लेना, है ना. ऑल राइट. Shazia Sheikh, this can happen actually. Shazia, okay, this actually can happen. Shazia is talking about freezing in the middle of the paper or zoning out. It can happen. All I can say is, remember guys, if you suddenly think that your mind is not working, this actually works. Okay, and it's very famous. Deep breathe. Deep breathing technique will really help. If you think your mind is not working, you are stuck somewhere, just close your eyes, take 2 or 3 deep breaths, and either leave that section or that passage, move on to something else, and come back to it later. It will work. Shazia, try doing that next time. Deep breath can actually help a lot. Okay, तो कहीं अटक वटक गए ना, आंखें बंद करो, 2-3 सांस लो गहरी, and you have to come back. हो जाएगा, डोंट वरी, एकदम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. Whatever you are telling me, remember guys, it happens with everybody, every single year, not a new thing. आपके लिए नया है, but ये होता है. You would be able to manage it despite all this. Anyways, I hope I have answered most of the questions. Obviously, सारे तो नहीं दे सकता answers. Tomorrow we have 8 o'clock session for assumption, critical reasoning assumption. So if you have missed the concept, or if you have done the concept but you want to revise, you're most welcome at 8 o'clock tomorrow. Okay, I'll see you tomorrow. And on 26, 27, 28, 29, you can see there's a series of sessions for CLAT 2022. So please don't miss, and also share with your friends. उनको ही बता दो यार, उनको ही फायदा हो जाएगा, है ना. जैसे अंकुर शर्मा सर लेंगे ज्योमेट्री क्रैकर, मतलब इस सेशन में तो मैं आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे तो बस की नहीं है ज्योमेट्री. तो क्या करें, बट यू गाइज कैन रॉक, स्टिल रॉक इट.
प्लीज मेक श्योर यू यूटिलाइज एवरी सिंगल डे, और ये सेशंस आप बिल्कुल मिस मत करना. ओके, वी विल ऑल्सो हैव लाइव एनालिसिस सेशंस ऑन 19th and 26th क्लैट और एलेट के लिए. इनको मिस मत करना, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बता सकते हो. एंड यू कैन ऑफ कोर्स keep in touch with us. You can join our sessions. You can join us on the app, on the Instagram, Facebook, etc. मतलब हम हर जगह पे. Most welcome to join us. All right, everybody. Thank you so much for coming here. I'll see you again tomorrow. Assumption questions we'll take up tomorrow. All right. I'll see you again. Thank you so much, everyone. Bye bye. Please keep on working hard. You still have a lot of time to prepare. Thank you, everyone. Bye bye.